Guys, welcome to another video. So in this video I'm gonna talk about something which I personally feel is very important. It is super important for your mental health, especially for the people of our generation because हम छोटे से ही बहुत सारे लोगों से हमें compare किया जाता था and it's hard to actually undo that behavior. But I'm not saying comparing yourself with others is bad. So every coin has two sides. But yeah, so good side being you get motivated, you learn from them, you may or may not achieve things that they achieved and you idealize them. ये सब बहुत अच्छी चीज़ है. But there are a lot of bad and negative aspects to this. तुम jealous हो जाते हो, तुम अपने आप को inferior समझने लगते हो, तुम्हें लगता है तुम्हारी life waste है and वो बहुत एक vicious circle हो जाता है. And most of the times it's this only. बहुत पीछे छूट गया ना भाई, बहुत पीछे छूट गया. So in this video I'm going to talk about how to use this power of comparison which nature has given us to actually do something good with our lives and actually improve our lives, and I will be giving 3 ways to do that. So yeah, if you are interested in that, it would be a pretty short video, so I request you to watch it till the end. Let me break this down properly. Comparison मैं वैसा टाइप का नहीं बोल रहा कि let's say शाहरुख खान does something, शाहरुख खान does 3 movies or 4 movies. You wouldn't waste a single second comparing yourself to him because you already know कि उसके पास जो resources हैं, उसके पास जो advantages हैं वो अलग हैं, तुम्हारी conditions अलग हैं. You generally tend to compare with people who have similar conditions and who come from very similar backgrounds as you. Be it your college, like people from your college or people who close friends circle of like group, तो तुम उनसे ही compare करते हो because you kind of have that feeling कि यार ये तो मेरे जैसे ही हैं तो ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता. And this is a positive feeling. I'm not saying कि ये बुरी चीज़ है या इसको तुम अभी हटा दो. देखो the fact that there are a lot of ideologies कि you should compare yourself to yourself, मतलब you should just compete with yourself, you should improve yourself every single day. These ideologies are pretty good, okay? They work 90% of the times for me. I don't get affected काफ़ी बार बाकी लोगों से because मुझे पता है ठीक है ये मेरा गोल है and I'm on the way and ये होता रहेगा. But 10% of the times कुछ कोई ऐसा करता है कि यार तुम्हें लगता है कि भाई ये तो फोड़ा मस्त and मैं क्यों नहीं कर सकता ये, and that is a pretty good feeling, right? But it also might lead to a lot of negative emotions, like तुम उससे जलने लग सकते हो. It might give birth to jealousy between you guys. It might ruin friendships, it might ruin relationships. You might have a negative self-image created and you might just get depressed for a pretty long time. So there are 3 ways in which I personally tackle that. I'm not saying कि मैं पूरी तरीके से unaffected रहता हूँ या I have overcome the feeling of jealousy or something. No, I'm a pretty normal human being. It's just that these 3 things actually help me a lot. Also, before I move forward, if your friend or anyone who is close to you achieves something, the first feeling that you should have is congratulating them. उसको दिल से, तुम्हें उसके लिए बुरा है, उसके लिए कुछ बुरा नहीं फील होना चाहिए, ठीक है? जो भी कुछ होगा तुम्हें अपने से अपने को कंपेयर करना है, अपने को बेटर बनाना है, ठीक है? तो इसी के लिए ये 3 तरीके हैं. The first question that I usually ask myself is, do you actually want to achieve that thing? So like spend good 2-3 minutes thinking about this and answering that question. अब कोई तुम्हारा बंदा मान लो, okay, so there is this thing, if I remember correctly, कि if you find a security threat in let's say Microsoft or Google or all these big companies, they pay you a huge chunk of money. It's like around 20 lakhs or something based on the bug and the solution that you provide. So that is a pretty huge money. But अब मुझे जैसे cyber security का कुछ idea ही नहीं है, तो just to get, so am I getting affected because of the success कि उसने इतना अच्छा bug निकाला या उसने इतना अच्छा वो किया, किसी दो रैंडम एग्जांपल है कि उसने इतना अच्छा कोड किया है, उसने इतना अच्छा इतना मस्त आइडेंटिफाई किया बग, इसकी वजह से मेरे को मैं अफेक्ट कर रहा हूँ कि इसको इतने पैसे मिले, उसकी वजह से मैं अफेक्ट कर रहा हूँ. एंड मोस्टली इट्स द लैटर पार्ट. तो तुम इसी में उस चीज़ों से निकल के कि अच्छा ठीक है पैसे ही तो है, पैसे तो मैं अगर अपनी फील्ड में भी अच्छा करूँगा तो मैं कमा लूँगा, पैसे तो पैसे हैं, मतलब ज़रूरी नहीं कि मैं इससे कंपेयर करके करूँ. तो तुम फर्स्ट स्टेज में ही बच गए उस फीलिंग से, जेलसी और उन सब फीलिंग से पहले. द सेकंड क्वेश्चन इज, कैन आई अचीव दैट बाय वर्किंग हार्ड? Now, everyone in this world has some unfair advantages. They have some skills, they have some talents which you can't do anything about. And luck factor, जब किसकी लॉटरी लग गई तो you obviously can't achieve that by hard work, right? तो उस केस में तुम इन सबसे पहले ही निकल जाओगे. But if the answer is yes, for both the questions,
then you should actually get in touch with them and ask them कि आपने कैसे किया, even I want to do this. This actually was the case for me with GSOC, okay? तो GSOC में इसकी वजह से ही निकला था. I was like कि ठीक है, मुझे करना है, because मुझे मज़ा आता है, open source मैंने किया था, इसलिए हाँ ठीक है, सब कैसे करते हैं. Then I got in touch with them and I actually learned from them. उन्होंने अपने experience share किए, सीखा, and फिर उससे मैंने भी अपने आप में improve किया. GSOC मेरा kind of अभी तो almost complete ही हो गया project, but हाँ अच्छा हो गया life में. तो that is the second question. If I work hard, can I achieve that? If the answer is no, then you can't do anything about it. If you can't work hard to achieve that, that means there's a luck factor and तुम फिर कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में. तो there is no point thinking about it, right? So एक बहुत अच्छी लाइन है यार, मुझे एक गाना बहुत पसंद है which is Mirage by Dino James. उसमें वो ये कहता है, तू फल तोड़ने चला है जो बीज तूने सींचे नहीं. तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि यार उस बंदे ने मेहनत करी है. ही हैज़ पुट इन दैट अमाउंट ऑफ एफर्ट्स, ही हैज़ पुट इन द वर्क दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अचीविंग दैट थिंग एंड उसको वो मिला है. देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट दैट. अगर तुम वो और तुम उसके बस फल तोड़ने चले हो, तुमने बीज ही नहीं सींचे, तो तुम्हें उसके लिए पहले फाउंडेशन बनानी है, तभी तो तुम वो अचीव कर पाओगे. नाउ इफ द आंसर फॉर बोथ द क्वेश्चंस वाज यस, I asked you to make a plan and get in touch with the person who has actually achieved that and he would mentor you. Now comes the third thing. You have started on the journey. तुम्हारे पास mentorship है उस बंदे से, तुमने उसको अच्छे से and all that would come दिल से. अगर तुम दिल से उसके लिए खुश होगे ना, तभी वो बॉन्ड अच्छा बनता है. मतलब अगर तुम उससे मन ही मन चलते रहोगे या करते रहोगे तो पता चल जाता है यार, वो मतलब समझ में आ जाता है उसे जब तुमसे बात करेगा. तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी बोलूँगा, दिल से खुश होकर उसको विश करना सीखो. मतलब वो तुम्हें पहले खुद ही करना पड़ेगा, उसके लिए कोई टिप नहीं है. But ठीक है, moving on to the third point. Once you are on the journey, once you are improving yourself, you are working hard, and you have made a plan. Then comes this thing, which is what is the worst that can happen if you are not able to achieve that thing. Now you should actually come in terms with the worst thing that can happen. Okay, तभी you'll be ready to give it your best shot. Okay, वरना तुम जब भी वो करने जाओगे या whenever you'll start working towards that goal, your mind will feed that thing कि यार ये हो गया तो, and then you'll be like okay shit ये तो मैं करूँगा ही नहीं, फिर मेरा time waste हो जाएगा. This is true for any big goal that you have, be it JEE preparation. So what is the worst thing that can happen? Even for let's say your JEE preparation, you have all these sessions जिसमें तुम्हारे coaching institutes वाले IITians और सबको लाते हैं and share their experiences. तो ठीक है, तुम जो सीखते हो and then you start on a journey. What is the worst thing that can happen? You might not get selected. You might have to drop an extra year. But you come in terms with that, right? तुम वो हमेशा रिस्क लेके चलते हो and वो तुम्हें मोटिवेट करता है और अच्छा करने के लिए, so that you don't get affected, you don't be in that position. So yeah, these are the 3 tips which actually helped me a lot, and I'm able to at least not achieve fully, but I'm able to give my 100% for the long-term goals that I have for me. And I hope you learned something in this video. This was a pretty like one-on-one video. इसके लिए कुछ ज़्यादा prepare नहीं किया था मैंने. I didn't even read this from any book or article. This is just a personal thing which I feel helps me a lot. And yeah, you should totally check out Mirage by Dino James. It's a pretty good song. वो fourth चीज़ होती है, अगर इन तीनों के बाद भी वैसा दुखी सा होता हो तो I listen to that and मस्त मतलब sort हो जाती है, life clear हो जाती है. चलो guys, thanks for watching. See you.